Good morning, students. So now we'll see this evolution of networking. In the previous part, you can see this playlist, Computer Science 083. Okay, this is the class 12 that we are doing, that is term 2. So let's start with this evolution of networking. So this is the image that I have taken. Okay, so first we have this in 1969, the world first message was sent over ARPANET, that is Advanced Research Project Agency Network. And after that, we have this in 1976, the UK's Queen sent her first email to Army base. And after that, in 1978, the first spam message was sent for commercial. अब 1984 में .com were introduced. After that, in 1996, Internet Explorer and Netscape started using. 1995 में Amazon and eBay were introduced. Okay, and after that, now you can see 89 के बाद 94, 95, 96 and 98 Google were introduced. Okay, the important here is 1989. What is the most important thing happened? Now you can see Tim Berners-Lee invented World Wide Web. Okay, after that, okay, so let's move on to the important part now. So now we have this error detection and error checking. Okay, so while transmitting data over network, some error may occur. Okay, if you are transmitting data in a form of bits, so कुछ error आ सकती है, कोई lost हो सकते हैं हमारे bit. Okay, so what is this error called? And data may get corrupted. So this means that intended data has not reached the receiver node and it is an error. Receiver तक वो पहुंचा नहीं है, तो बीच में कोई error है. So we have types of error, students. First error we have is single bit error. If only one bit of the transmitted data got changed from 1 to 1. अगर सिर्फ एक bit में change हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, it is a single bit error. Okay, and next error we have is multi-bit error. If two or more non-consecutive, लगातार नहीं, अलग अलग. Okay, अगर एक bit starting में है तो बीच में ending में नहीं है. Okay, लगातार नहीं होनी चाहिए. Data got changed. Okay, that is a non-consecutive. First error में क्या है? If two or more consecutive bits in data got changed. Okay, these are the error. And now example that we have is data transmit in bit forms. Okay, so now you can see this is a single bit error. आप देख सकते हो 11001111. यहाँ second last को आप देखोगे, now you can see the second last bit is changed from 1 to 0. It means there is a single bit error because in single bit only there changes there. Now error checking, error detection. To avoid such error in transmission, error detection or error checking methods are used in computer network that ensure if the receiver packet is error free or not. तो check करना जरूरी है कि जो receiver पे packet पहुंचा है वो error free है या नहीं. The most commonly used method are, सबसे पहले हम यूज करते हैं single dimensional parity checking. पैरिटी होता क्या है? व्हाट इज अ पैरिटी? पैरिटी रिफर्स टू एडिशनल बिट. एक एडिशनल बिट हम ऐड करते हैं. ओके, अब सिंगल डायमेंशनल में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ वंस किसी तरह इवन बनाना. अब यहाँ इस ये मैंने सेंड किया डेटा. ओके, सेंडर नहीं तो आप इसमें बन गिनो 1 2 3 4 5 6. तो ऑलरेडी 6 अगर 1 होंगे, इवन 1 है तो उसके बाद आप 0 लगा सकते हो. अगर इवन होंगे, ऑड होगा तो एक 1 लगा के इसको इवन बना लो. ओके, तो जो डाटा आपने सेंड किया दैट शुड बी बेसिकली सेंड टू रिसीवर एंड रिसीवर शुड गेट दैट डेटा करेक्टली. Now add an extra bit either 0 or 1. 0 अगर ऑलरेडी इवन है तो 0 ऐड करेंगे. 1 कितना है आपको, उस बिट में कितने 1 है. ओके, now the data is transmitted. Now from the data which has been received exclude the parity bit. अब जो डेटा रिसीवर को मिलेगा वहां से parity bit हटा देंगे and either add 0 or 1 to make ones appearing even number of time. फिर चेक करोगे, फिर वही चेक करना है कि even number of ones आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. ओके, only just have to take a hint only. Okay, don't go deep for this term 2 examination. You just have a knowledge of what is this going on, what are the types of error. Okay, लाइक दिस वी हैव टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग है. देखो उसमें रोज एंड कॉलम में हम नंबर ऑफ वंस देखो यहाँ पे क्या है. यहाँ पे 1 देखिए तो 1 2 3 4 है. तो अगर ऑलरेडी इवन नंबर 1 है तो यहाँ 0 लगा दिया मैंने. रो की बात कर रहा हूँ देखो मैं अभी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड रो, सेकंड में सिर्फ 1 है तो एक और 1 लगाएंगे तभी तो इवन बनेंगे नंबर ऑफ 1. नाउ थर्ड रो वी हैव 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ वंस है. तो जो ऑलरेडी इवन होते हैं तो 0 लगा के इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे. ओके, ताकि वो नाउ आफ्टर दैट 1 2 3 3 इवन 3 1 है तो एक और लगाएंगे 1 सो दैट इट विल बिकम इवन. ऐसे हम कॉलम में करेंगे. ओके, सो नाउ दिस इज द यूज ऑफ दिस टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. क्या होता है ये टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग? इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल पैरिटी टेक्निक. इट कैन डिटेक्ट मल्टीपल बिट एरर आल्सो. लेकिन सिंगल जो डायमेंशन होता है वो मल्टीपल बिट एरर नहीं पकड़ पाता है, बट टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग कर सकते हैं. ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस, इट कैन डिटेक्ट, इट कांट डिटेक्ट कंपनसेटिंग मल्टीपल बिट एरर. ये है जो हमने पढ़ा. ठीक है, इट कैन डिटेक्ट 4 और मोर बिट्स एरर इन सम केसेस. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूआरएल एंड आईपी एड्रेस. सो देयर आर सम एड्रेसेस ऑन द नेटवर्क स्टूडेंट. सो फर्स्ट नेटवर्क में हम पढ़ते हैं वेब एड्रेसेस. दैट इज यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द लोकेशन ऑफ सर्वर. सर्वर की क्या लोकेशन है ऑन द इंटरनेट पे, दिस इज कॉल्ड वेब एड्रेस. ओके, वो आप देखते हो अगर सीबीएसई भी कोई वेबसाइट है तो cbse.nic.in लाइक दिस वी हैव डिफरेंट वेबसाइट एंड इट हैज अ एड्रेस.
अच्छा आप लोगों का भी एड्रेस है इन द सेम वे उस वेबसाइट जो स्टोर है सर्वर पे व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट सो वेब एड्रेस इज एड्रेस दैट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ अ सर्वर ऑन द इंटरनेट दैट सर्वर मे बी ऑफ एनी टाइप दैट मे बी सर्च इंजन ईमेल सर्वर फाइल सर्वर वेबसाइट एक्सेट्रा each website has a unique address called हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है that is URL that is uniform resource locator if you take an example the web address of the URL of the CBSE website that is https cbse.nic.in any URL look like type हमेशा टाइप होगा देखो टाइप में HTTP हो सकता है और HTTP ऐसे सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर स्लैश में उसका एड्रेस डालेंगे फिर फर्दर पाथ चलेगा हियर HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल cbse.nic. is the address of the server ठीक है ये वेबसाइट का एड्रेस होगा Now, what are the elements of URL? URL is uniform resource locator, is the address of the file resource on the internet. The element of the URL are the type of server. Server का type क्या अभी हमने पढ़ा अगर HTTP है, HTTPS है, secure version है, name address of the server है, और उसका नाम क्या है server का and associated file of the server. Okay, ये देखो ये example अभी मैंने दिया था. CBSE that is a type .nic. This is the .nic.in. This is the further path you can also give. अब आईपी एड्रेस क्या होता है एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है दैट कंटेन्स अ यूनिक एड्रेस उसका एक यूनिक एड्रेस होगा दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ईच आईपी एड्रेस इज अ सीरीज ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स हम पढ़ चुके हैं पहले ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस दैट इज सेपरेटेड बाय डॉट्स तो 4 बिट्स से होता है 4 नंबर्स दिए जाते हैं ओके Now is an IP address having 4 numbers separated by dots. This representation of IP address is called dotted decimal form, but the computer will internally convert them into binary. क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट समझता है तो जो डेसिमल से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस इजीली अब now we have some internet protocol versions this is also very important so we have IPv4 and IPv6 so first version is internet protocol version 4 this is the most widely deployed internet protocol used to connect devices to the internet ये आपका 32 बिट एड्रेस यूज करता है that is 32 बिट एड्रेस it is using आप लगा लो इतने एड्रेस जनरेट होंगे 2 की पावर 32 दैट इज 4 बिलियन एड्रेस बट नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इसीलिए हम IPv6 पे गए तो हमें एड्रेस अब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं यूनिक एड्रेस वी वांट मोर एड्रेस इवन दिस IP एड्रेस विल बी कंज्यूम सून एज द नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड विद द इंटरनेट ठीक है इसीलिए हम IPv6 पे गए बिकॉज़ वो एड्रेस कंज्यूम हो चुके हैं 2 की पावर 32 बिकॉज़ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लैपटॉप डिवाइसेस आर इंक्रीजिंग okay so now if we discuss about this IPv6 तो इसमें क्या होता है which is a developed keeping in mind with the increasing demand for internet address IPv6 में अब 128 bit address now means 2 की raised to power 120 now you can see okay this is the address format इसका address size है 32 bit number इसका address size है 128 bit number okay now this is the number of addresses now you can see 2 की power 32 then अभी because of increase in the devices now you can see that's why we have moved on to this IPv6 Now, what is this domain name and DNS? The URL uniform resource locator of a website is also known as its domain name. It is the unique name of the website. It can't be duplicated. Unique name होता है website का. A domain name may look like www.code.in. Here, www represent World Wide Web, which is usually fixed. What is www? It's World Wide Web. Okay, जब हम start करते हैं, code is a name describing ये नाम है website का. TLD. टॉप लेवल डोमेन देयर आर कुछ डोमेन्स हम ये डोमेन्स की बात कर रहे हैं .in .com .net .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजुकेशन के लिए .edu ये सब टॉप लेवल डोमेन होते हैं अ डोमेन इज आल्सो नोन एज DNS नेम डोमेन नेम सिस्टम नेम अ डोमेन नेम अब सबसे डोमेन से इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है दैट इज डोमेन नेम रेजोल्यूशन अब किसी भी वेबसाइट पे आपको पहुंचना है स्टूडेंट्स इट एड्रेस द डोमेन नेम एज अ डोमेन नेम इज मच इजियर टू रिमेंबर अब आप उसमें आईपी एड्रेस सुना लिखते हो 197.32.636.45 हमें उसका नाम याद हो चुका है But in order to reach a computer server on the internet, its IP address is required. So this domain name needs to be changed with respective IP address. Domain name हम resolution होता है. हम तो सिर्फ नाम दे रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन वो सर्वर सिर्फ IP address समझता है. तो this domain name has to be converted into that IP address. So this is done by this domain name resolution, which is done through the process of domain name resolution. So this domain name resolution refers to the process of obtaining this is corresponding IP address. Now, how domain name resolution होगी काम कैसे करता है स्टूडेंट्स यू ओपन अ वेब ब्राउजर एंड टाइप योर डोमेन नेम आपने डोमेन नेम डाला इफ यू हैव गिवन दिस www.cbse.nic.in नाउ योर वेब ब्राउजर इंस्ट्रक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द गिवन डोमेन नेम अब आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस गिवन डोमेन नेम की कॉरेस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस देता है एंड देन OS ट्राई टू रिजॉल्व द डोमेन नेम एज पर इट्स कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज डिफरेंट फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम तो सर्वर उसको रिकॉग्नाइज करता है आईपी एड्रेस को उसके बाद आपको उसको एक्सेस मिल जाता है Now we have some basic networking tool also. So while working on the internet, we may come across many problems. To overcome this problem, we have some tools or some simple networking commands. कुछ commands some होती है that you need to learn. ठीक है? These are some commands that we will learn today. We'll discuss only up to 5. So first command is ping, ping command. This command is used to check whether an IP address on the website is responding. कि जो IP address आपका unique address आपको दिया हुआ है, यदि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसके लिए ping command होती है. Please remember these definitions. These may come in one form. 1111
मार्क्स में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज traceroute, that is Linux, और traceart, that is Windows. This command is Linux के लिए traceroute बोलते हैं इस कमांड को, और traceart that is for Windows. This command is used to view the route using which you will be transmitting from your computer to the said website. जो भी आप रूट फॉलो कर रहे हो फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वेबसाइट, दैट डेफिनेटली गिव द फुल रूट, पूरा रूट हमें मिलेगा बाय यूजिंग दिस ट्रेस रूट. नाउ वी हैव दिस ns lookup. दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डिफॉल्ट DNS सर्वर नेम, कि आपका जो DNS सर्वर है उसका नाम क्या है. ओके, व्हेन यूजर टाइप्स डोमेन नेम इनटू यूआरएल बार इन द ब्राउजर, DNS सर्वर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलेटिंग दोस डोमेन नेम टू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस. सही बात है, मैं सिर्फ नाम डालता हूं और जो डोमेन हमारा जो ये सर्वर होता है DNS सर्वर, इसको कन्वर्ट करता है ना आईपी एड्रेस में, तभी तो हमारा सर्वर समझ पाता है, बिकॉज आवर सर्वर डोंट अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज, we understand only binary language. Now fourth is this ipconfig command. This command is used to display the detailed information about the network we are connected. हम कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ipconfig command देता है. Okay, now you can see this command syntax I have also given. Now next is who is command. That is, this command is used to get some information about a specific domain name, such as who registered, किसने register किया है. The domain name will expire and many things. कोई domain name कब expire होगा. Okay, अब इसका एक लास्ट आपने देखा होगा वाईफाई को हम स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं. सो स्पीड टेस्ट इज ऑल्सो अ कमांड. ठीक है, आप उसको गूगल से डायरेक्ट चला सकते हो, स्पीड टेस्ट हो जाएगा आपके वाईफाई का. ओके, यू जस्ट राइट वाईफाई स्पीड टेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल गेट व्हाटएवर द speed is 24 megabits per second, whatever the speed is, it will come. Okay, so that's all for today, students. So from next class we will start this network protocols and all. So you have to see this playlist. Okay, you have to see this all the parts. If you have, basically this is for term 2 computer networks that we are doing, that this is just this will give you 10 marks. Okay, after basically see the playlist for your more reference. You can learn this from Smita Arora. You just read it once and definitely your work is done. You will get 10 marks, 100% will get 10 marks. Okay, students, so that's all for today. Thank you so much.